Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. In this video today, I'm going to start with a new series for the preparation of Central Bureau of Investigation examination for Assistant Public Prosecutor. इस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जजमेंट्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं देन योर प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट especially from such kind of topics that is Indian Penal Code, these criminal law topics, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप इनमें से भी जजमेंट्स नहीं पढ़ेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प over that subject, and also if any question comes in the examination it will become difficult for you to ace the examination. So I have started a series dealing with important judgments that will be 5 in number, and that will be from all the important topics from important subjects. So don't forget to subscribe to LegalBee and take benefit of all the videos that are upcoming. You can also download the PPT of this video along with this video. That will also definitely help you out. And yes, watch this video till the end. अगर आपको कोई भी नोट्स बनाने हैं आप साथों साथ बना सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. एंड अगर आप पीपीटी डाउनलोड कर लेते हैं डेफिनेटली दैट विल कीप यू अपडेटेड, एंड ये आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा हमेशा के लिए. यू कैन ऑल्सो रिवाइज इट लेटर. So once again, I would welcome you all to iExamB, and don't forget to subscribe to our YouTube channel that is LegalBee. अगर आपके कोई भी queries हैं, you can reach out to us on hello@iexamb.com, call us on 9205524028, or visit our website www.iexamb.com for more details for all the courses that are available. The first case that we will be dealing is Mirza Ghani Beg versus State of Andhra Pradesh. Let me once again remind you that the topic for today's video is Indian Penal Code General Exceptions. General Exceptions एक बहुत ही important topic है IPC में से, और उसमें से हमने कुछ केस लॉज पिक किए हैं डिस्कशन के लिए. इन केस लॉज के द्वारा आप लोगों का कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा एंड आपको लैंडमार्क केसेस भी पता लग जाएंगे. So in this case, what had happened, what was discussed, I will be telling you in very brief, not very detailed discussion we are going to have. You can note down these citations and go through it in detail. In this case, it was held that voluntary drunkenness is no excuse for commission of a crime. So this is very obvious, and voluntary drunkenness अगर है तो उस केस में आपको excuse तो नहीं मिलेगा for the commission of crime. That means this is not covered under general exceptions. So far as knowledge is concerned, the standard of test is same as in case of intention. ये यहाँ पे उन्होंने जो mention किया है ये point काफ़ी ज़्यादा important है, that so far as knowledge is concerned, the standard of test is same as in case of intention. Intention, knowledge, ये सारे अलग अलग shades हैं mens rea के. तो अगर हम मेंस रिया की बात कर रहे हैं, अगर हमें समझना है कि इस केस में कितना नॉलेज या कितना इंटेंशन अक्यूज्ड के पास था या अक्यूज्ड के माइंड में था, अक्यूज्ड ने अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से कोई एक्ट किया है तो वो मर्डर होता है, लेकिन अगर वो एक्ट एक्सीडेंटल है तो वो इमीडिएटली कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाता है. We all are aware of this and we now know the difference between intention and knowledge. So इस केस में उन्होंने कहा है that अगर voluntary drunkenness है तो हम कोई excuse नहीं देंगे and knowledge और intention के लिए same test apply किया जाएगा. The court must attribute to the intoxicated man the same knowledge as if he was quite sober, unless he was besides his mind altogether at the time of incident. So it will be imputed that he was a normal person, he did not drink, and whatever things he has done or whatever activities he has done it without any effect of intoxication. ऐसा presume करके कोर्ट को चलना होगा और इस डिफेंस को completely ignore कर देना होगा. Besides कि वो completely अगर वो बिल्कुल ही होश में नहीं है, पूरी तरीके से उसका out of mind हो चुका है, then that is a exceptional case. Next judgment, Madan Mohan Pandey versus State of UP 1991. In this case, it was held that in judging whether the accused has exceeded his right to private defense or not. Right to private defense is a very important area
96 to 106 आपको पूरी तरीके से लर्न होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये जजमेंट्स के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसलिए इसमें से मैंने काफ़ी जजमेंट्स पिक किए हैं फॉर आर डिस्कशन। सो इसमें क्या पॉइंट डिस्कस किया गया है, वेदर द अक्यूज हैज़ एक्सीडेड हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस और नॉट. The court has taken into account the weapons that have been used by the accused, because by taking consideration of the weapons that he has used, it can be made out whether he was having an intention or whether he was having a pre-planned intention to murder the person, या सच में उसको private defense avail करना पड़ा। ये चीज़ वेपन्स से भी पता चल सकती है। अगर पास ही में पड़ी स्टिक उसने उठा ली और उससे मर्डर कर दिया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने मर्डर किया है। अगर वो उस पर अटैक कर रहा था और उसने तुरंत वो स्टिक उठाकर उसके साथ प्राइवेट डिफेंस में उस पर वार किया और वो मर गया, देन वी कैन नेवर से दैट इट इज़ अ मर्डर। लेकिन अगर उस पर अटैक किया गया था विदाउट यूजिंग एनी वेपन्स, लेकिन एक्यूज्ड ने नाइफ रखा था जो कि बहुत ही शार्प एजेड था, तो इससे क्या इंटेंशन प्रूव होता है या किस तरीके से कोर्ट का माइंड वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, दैट दिस पर्सन माइट बी हैविंग सम और द अदर प्री प्लान और इट माइट बी मर्डर ऑल्सो। सो इस समय कोर्ट को काफ़ी कॉशियस रहना होता है। Next case, Savai Ram versus State of Rajasthan 1997. In this case, it was held that the accused is not required to prove that plea of private defense of person beyond reasonable manner of doubt. This is also an important point relating to proofs, that private defense को beyond reasonable manner of doubt prove करने की ज़रूरत नहीं है, as we have in the case of prosecution has the burden of proof for the entire case to prove it beyond reasonable doubt. Same thing cannot be applied for the accused relating to private defense. Private defense के केस में obviously it is a special fact which the accused has put forth, तो वो fact को prove करने का burden तो accused पर ही रहेगा, लेकिन वो beyond reasonable doubt के level का नहीं होगा. This is also very important technical point that has been discussed by this court in Savai Ram versus State of Rajasthan. The onus on the accused is only to show that the defense version is probable one, which is reflected from the salient features and the circumstances in the prosecution case itself. So that has to be shown that the defense is a probable story. It should not be artificial one. Hudu versus State of Uttar Pradesh 1993. In this case, the Honorable Supreme Court has observed, if the accused had already dealt several blows on the deceased, he could not have been in a position to shoot at the accused persons. Having regard to some of the admissions made by the witnesses, it appears that the accused took a forcible possession of the land some days ago. Therefore, even assuming that they came into possession after committing trespass, if the deceased and others had gone to the land, they cannot be held to be aggressors as pleaded by the defense. So इस केस में फैक्चुअल स्टोरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे कट करके यहाँ पे लिया है. दैट मीन्स कि उनकी हिस्ट्री देखी गई थी कि अक्यूज ने फोर्सिबली पोजेशन लिया था डिसीज्ड और ग्रुप ऑफ पीपल से. तो ये एक्सपेक्टेड था कि डिसीज्ड कुछ दिन के बाद ऑब्वियसली उस लैंड पर आने की कोशिश करेगा. सो वी कैन नॉट से कि वो ट्रेसपास कर रहे थे और अचानक आपने उनके ऊपर हमला कर दिया. दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू हैव डन इमीडिएटली विद सडनली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्री प्लान और एनी काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू आर हैविंग. So this is something where private defense becomes a very difficult part to judge. So here also court has found out that the accused had already dealt several blows on the deceased. उसने काफ़ी बुरी तरीके से deceased को मारा भी था. So he could not have been in a position to shoot at the accused persons. तो वो आपको मार रहा है, ये आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते. ये केस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड इट. Deonarayan versus State of UP 1973. Another important case. As per section 102 of IPC, the right to private defense arises as soon as a reasonable apprehension of danger is felt.
ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, ये वर्ड, इसका इंटरप्रिटेशन एंड इसके साथ राइट टू प्राइवेट डिफेंस बिगिन हो जाता है। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय एवरीबॉडी। This apprehension can arise due to an attempt or threat to commit an act and does not necessarily have to depend on the actual commission of the act. So attempt या threat, suppose अगर assault भी हो जाता है तो भी ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक एक्चुअल कमीशन ऑफ द एक्ट होना चाहिए। दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर रीजनेबल एप्रीहेंशन of danger. When we have to understand the first point of time when reasonable apprehension of danger was felt by the accused, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्चुअल कमीशन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बिगिन एज सुन एज द एप्रीहेंशन फॉर अटेम्प्ट और थ्रेट हैज़ arisen. So this is also a very important technical point. And right to private defense, it not only starts with it but continues as long as the apprehension of that danger continues. So this proportionality we have to remember as discussed in 102 of IPC and elaborated in the case of Deonarayan versus State of UP 1973. So this threat will be continuing. The threat, however, must be present and imminent and not remote in nature. It should be quite imminent. It should be quite grave. It should not be very remote कि आप जिस थ्रेट की बात कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इफेक्ट हुआ है, एक्चुअल कमीशन तो हुआ नहीं है, लेकिन जो थ्रेटनिंग, जो अटेम्प्ट आप बोल रहे हो कि उसके वजह से आप डेंजर में थे, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा रिमोट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंट नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ वॉट has been covered in this particular case relating to the right of private defense. I have covered right of private defense because there are many cases on this topic and it is a topic worthwhile in which many points are covered, many technical things have been covered by way of case laws. I would suggest all of you to go through more and more cases as much as you can and update yourself. Also, this can be a very good revision for you people. So don't forget to subscribe to our YouTube channel Legal Bee. If you have any queries, you can reach out to us as I told you by any of the modes that are mentioned here and prepare 50% faster with us at our exam bee. Thank you everybody. Have a good day.